Hello everyone, today I will discuss relations and functions, which is the from the NCERT class 12 part 1. ठीक है, I will discuss about number 1, exercise 1.2. Which is exercise 1.2 number 1. Number 1 क्या, show that the function f from r star to r star is defined by f of x equal to 1 by x, which is 1 1 and 1 2. That will be carefully understand that 1 1 and 1 2, which is 1 1 and 1 1 1 1 1 का मतलब है suppose A is a set and B is also a set. If there is 4 element and there is 4 element or 5 element, 4 or 5, suppose number 1 maps to that, number 2 maps to that, number 3 maps to that, and number 4 maps to that. Here the every element has the unique distinct image, distinct element of x are distinct. इमेज यहाँ पर जो है ना, इमेज that is image set and that is the domain image set also, that is image set that range is that and that is the range. Every image of a set is distinct. That is called 1 1. Which is onto क्या है? onto का मतलब every image set से has the pre-image. Every element of set V, there is pre-image. This is called onto. So 1 1 मतलब क्या है? Distinct image onto every element of image set has pre-image. That is called onto and 1 1.
अंडरलाइन द पॉइंट डिस्टिंग इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, here the question we see that f of x equal to 1 by x, that is our function, and f from r star to r star। r star का मतलब यहाँ पर है नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। शो दैट 1 1 and all 2, and that is r star and that is also r star। यहाँ पर एवरी एलिमेंट है, जीरो नहीं है। यहाँ पर एवरी एलिमेंट है लेकिन जीरो नहीं है। इफ r star show every element has distinct pre-image, suppose there is an element x1 and x2, and x2, if f of x1 equal to f of x2, that implies f of x1 and x1 equal to x2। if we see that, that is 1 1। if and यहाँ पर एवरी एलिमेंट का प्री इमेज है, ओनली एक्सेप्ट जीरो। जीरो का अलावा जीरो का प्री इमेज नहीं है। जीरो का प्री इमेज क्या होगा? एफ ऑफ इफ सपोज कोई जेड एलिमेंट है, who have the 1 by 0 z, suppose let f of z equal to 0, that implies 1 by z equal to 0। that implies 1 by z equal to 0, implies z does not exist, does not define z। so यहाँ पर जीरो एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स विल बी क्लियर 1 1 and 1 2। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव, इसका मतलब है 1 2। नंबर 1 क्लियर कर दिया है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा। f of x equal to x square, that suppose a set and b set, ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, और यहाँ पर एलिमेंट है 1 4 9 16 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 1 का इमेज 1, 2 का 4, 3 का 9। so every element of A has the distinct image। यहाँ पर 1 का प्री इमेज 1, एवरी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज है यहाँ पर। सपोज B is the set of natural number
here the element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना सारे एलिमेंट है, लेकिन 1 का प्री इमेज है 1, 4 का प्री इमेज है 2, 9 का प्री इमेज है 3, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, अदर देन 1 4 9 2 3 5 6 7 8 इसका प्री इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।